While we are waiting for people to join us, people who have questions may start putting that up here. I can see some 4 question answers already there. Uh, and certificate, we can provide you an e-certificate later all to all the attendees. Yes, we can do that. Uh, Someone is asking any new cure identified it apart from DBS. Unfortunately, no. Deep brain stimulation still continues to remain the gold standard of treatment and the best possible solution for Parkinson's disease. What aspects will get covered in the webinar? Everything that is very relevant and interesting, including post DBS management, slowing down of Parkinson's disease, etc., etc. Many things will be covered in the topic. Are there non-drug method for Parkinson's disease and help control tremors? No, there are no non-drug method. There are some gadgets which can help to reduce the tremor by the feedback. Writer's cramp do not lead to Parkinson's disease. There are some interventions available for tremor. I will be discussing that for Parkinson's disease. Good. I can see a lot of interaction. People can throw their questions, and while we are waiting, so that no one's time is wasted, we all can be kept busy. But botulinum toxin is significantly helpful in cervical dystonia. I will be talking about MRG FUS also. PSP in advanced stage cannot be helped with DBS. Deep brain stimulation, there is nothing like laser stimulation, Dr. Nilesh. It's only deep brain stimulation. Stimulation is done opticogenetic stimulation is there, but it is only experimental in animal models. How to enhance speech after DBS patient? Very important question, and I will be talking about this in the meeting. Audio is not clear. I think it should be the audio of your internet connectivity. I think everyone else is hearing the audio clear. Yes, Dr. Smita, is it correct? You are hearing my voice clearly? Yes, sir, perfectly. Okay, perfect. So it might be your connectivity, doctor. So you can check your connectivity and go to a better reception area. I have not had a personal experience of LifeSpark technology. I have heard about it. Maybe I will be covering all these things in the next topic lecture after doing a little more research. Praful Vora Arora is asking that they have got polarized feedback for deep brain stimulation. Unfortunately, people in India like to opine on their personal experience. Medical science doesn't work on personal experience. Everyone has to take what is available in literature, what is available by large amount of studies, and I will be discussing those results with you today. But these results are very important, and an individual's experience doesn't count anything, including mine, who has got the largest experience of performing deep brain stimulation surgery. So I do not address that. The side effect about voice is important, and that is provided you understand it correctly, and I will talk about it in my topic of talk today. I think 1 minute more and we can go live. Okay, we have got a lot of questions, but I think it is time for us to kickstart in a 1 minute more, and then we'll kickstart, and then we'll be answering all these questions. The questions which are not answered, I advise you to just subscribe to this Just Log DBS YouTube channel, and you would be notified when I post answers to this question. If you look at this, you would see that how to diagnose Parkinson's in minutes. Does age matter in DBS surgery?
Is it true that Parkinson disease? So all the questions related to Parkinson disease are continuously addressed in this Just Look DBS channel, and just subscribe to it and you will get all the updated messages there. Okay, fine. So let me start my presentation. Asmita, if I can share the slides, thank you. Uh, Sir, sorry to interrupt you, but we will start with a session with your introduction. yes, please. Yeah, So, sorry, I missed it. Yeah, thank you. yeah, Ms. Devashri, can you? Yeah, I'm available. Yeah, Good evening to everyone here. So, I'm Dr. Devashri. It is my honor to introduce our distinguished speaker for today, that is Dr. Paresh Doshi. Dr. Paresh Doshi is the Director of Neurosurgery and Functional Neurosurgical Program, as well as the Director of Restorative and Regenerative Medicines at Jaslok Hospital, Mumbai, India. He holds several prestigious positions globally. Currently, he is the president of Neuromodulation Society, secretary of the World Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery, and the past president of Indian Society of Stereotactic and Functional Neurosurgery. He also serves on the boards of International Neuromodulation Society and Asian Australian Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery. He is also part of the International Task Force for Psychiatric Disorders. With over 60 scientific publications and more than 550 invited lectures worldwide, Dr. Doshi has made remarkable contributions to the advancement of neurosurgery. He is also the proud recipient of a PhD from Rajasthan University and numerous awards in the field of medicine and neuroscience. We are truly privileged to have him with us today. Please join me in welcoming Dr. Paresh Doshi. Thank you, Devashri. And let me start with my presentation now. Okay. Okay, can you see this? yes, we can see your slides. You just share the sound. Yeah, I've done that, both the things. Okay. Okay, yeah. So this is going to be an update on the advances in the management of Parkinson disease. So what are the topics that I would be covering today? What is MRGFUS? MR guided focus ultrasound. And this is one of the common and hot topic today. A lot of patients ask me this question. And what is its role in Parkinson's disease? Can we slow down the progress of Parkinson's disease? Which pacemaker should I use, or which pacemaker is right for me if I have to undergo deep brain stimulation surgery? The technology is expanding and we don't know the answer to this. What is the right age and time for undergoing deep brain stimulation surgery? And what if I do not get the expected benefit of deep brain stimulation surgery after doing the surgery? So, what is MRGFUS? Is it an old wine in a new bottle, or it is a new wine in old bottles? The question here is that is it something really innovative, or that is something which has been already done in the past, which is now being packaged to be delivered in a different manner? And I will explain you why I put this cartoon here. The first area that you see here is of MRGFUS. So this is MRGFUS. This area is MRGFUS. This is gamma knife surgery. This is radiofrequency lesioning surgery. Sorry, this is Linex surgery and this is gamma knife surgery. All these four procedures, MRGFUS, linear accelerated guided surgery, or radiofrequency lesioning, or gamma knife, all produce the same change in the brain. Now, it is important to understand each word. It is the same change in the brain, and that is a small destructive lesion in the brain. You are damaging some small part of the brain, which we have found to be critical for the patients of Parkinson's disease to be restored balance. So that is what it does.
I need to close this. I don't know why these annotations will now disturb me. Just give me a second. Let me close this and restart it because I don't want this disturbance to cause issues with us. Reshare your slides, no problem. Yeah. Let me first go back to the sound, share, and okay. So we are back to beginning, and okay. These are the stalwarts of listening techniques. Professor Mark Sindhu, Joachim Kraus, Professor Tyra Lozano, and here Marwan Harris and Professor Tyra. So these are the stalwarts who have pioneered, and John Regis here. He does gamma linear accelerated and gamma knife neurosurgery. He does radio frequency listening. This is Paresh Doshi. He does radio frequency listening, and so on and so forth. So coming back to the what is MRG-FUS? The MRG-FUS is a typical device which operates at a particular frequency, and it gives focused ultrasound into the brain, and this focused ultrasound causes a destruction of a group of cells within the brain. The same thing can be achieved by X-ray radiation, which is linear accelerator, or a cobalt-based radiation, which is gamma knife, or radio frequency listening, which includes a probe which is heated and produces a lesion. So all this can do the same job, which is MRG-FUS. Out of these four, the radio frequency listening is slightly invasive because you have to make a hole on the top of the head and put a needle. But all the other aspects have been there for years and years, over a period of more than 40 years, and with good experience, with different outcome. So what is the current status of MRG-FUS? Unilateral essential tremor approval from FDA came in 2016. Then it came for Parkinson's disease. Then unilateral pallidotomy approval came in 21. And now pallido-thalamic tractotomy, bilateral pallido-thalamic tractotomy approval came in 2025. So what is the scientific data on this? So they found that when it was given to 94 patients, with 69 patients undergoing pallidotomy and 25 patients not getting any treatment, they found that the patients who underwent pallidotomy or therapy had 50% improvement, and here they had 28% improvement. Similarly, when they looked at the follow-up of 3 years, 3 months, 6 months, and 12 months, they found 70% of the patients who had undergone treatment continued to benefit from the outcome. The benefit was not large. It was narrow benefit. It was not as big as what you get by deep brain stimulation, but nevertheless, it was important. And based on that, the US FDA provided an approval to this therapy. As I said, old wine in new bottle. Yes, it is an old wine in new bottle, because you can look at this. These are my own publications. Forget the world. It is in my own publication. We have done capsulotomy for obsessive compulsive disorder, subthalamic nucleus lesioning, radio frequency lesioning for movement disorder and psychiatric disorder, paper published for 107 cases, stereotactic thalamotomy for task-specific dystonia or writer's dystonia, and so on and so forth. So as I was telling you, one of the ways of performing the lesion, which actually the MRG-FUS does, is radio frequency listening. And this we perform regularly for various neurological disorders, movement disorders. And you can see different kinds of lesion in different parts of the brain. This is a pallidotomy. This is subthalamotomy. This is thalamotomy. And this is lesion in anterior limb of internal capsule for capsulotomy, for OCD. So it is not one area, but several areas. And the outcomes are superb. Look at this patient
of Parkinson disease before surgery. He underwent the lesioning, the same thing that we are talking about MRGFUS, a lesional surgery. And this is after surgery. The patient who cannot walk, you can see he has undergone bilateral lesioning. And the person who could not able get up out of the chair is now able to get out of a low-lying sofa and walk independently. Similarly, pallidotomy, the one approval that the US FDA has given for MRGFUS, we had been performing it for many years. This is a patient in 1998 that we operated. Advanced Parkinson's disease, patient who is not able to get up is now able to do. Patient who has dyskinesia, in this video, in the top video, is not having any dyskinesia after the surgery, normal walking. So then why if this was so effective, why are people not doing lesional surgery? And why are we talking about lesional surgeries now when the MRGFUS has come? First of all, with any new therapy, there is a lot of hype and lot of noise on that. And that is what is causing the attention. But all these things have been existing. Unfortunately, most of the therapies are unilateral and Parkinson's disease is bilateral. So I don't see it ideal for that. Second, the cost of MRGFUS is several times more than any other therapy cost. Third, as a technical thing, I still feel that we cannot make a perfect lesion using MRGFUS and the science is getting perfected. And all patients are not able to tolerate. So what are the take-home message? MRGFUS is an evolving science. It has a limited and short-lived benefit in terms of Parkinson's disease, not in terms of tremor. It is a very useful tool for tremor. But then why you would like to spend 5 times more money for MRGFUS when you can get the same outcome by radiofrequency lesioning with 1/5 the cost and much more precision? Long-term results are not available. Side effects are not reversible because if you are making a lesion in the brain, unlike deep brain stimulation, that if you get side effect, you can stop the current and you will feel better. Here, you cannot do anything reversible. And then there are technical limitations. So I mentioned this at the beginning. This YouTube channel will be very helpful to you because I post all the queries of the patients as answers here and they are permanently there. So you can check out any of your queries. They might have already been answered. If they are not, then I will be answering many queries. So just subscribe to this channel and you will be able to get notifications of all the updates in the relation to Parkinson's disease. Second thing is Justlock is offering around 15% discount for investigation and treatment. And also this includes online and physical consultations with myself. Thank you. And to avail this discount, you should join the Justlock, Dr. Paresh Doshi's official webinar group so that we know that you are a part of the webinar attendees or webinar registrants so that we can offer you this discount. That is the requirement from the Justlock Hospital. Now the next question comes that can we slow down the progress of Parkinson's disease? And that is a very important question which everybody wants to answer for. So we conducted a trial and someone asked in the group also that is there non-medical, non-surgical way of slowing down Parkinson's disease? And yes, there is a way which we are ignoring and I will share the data for you. So the project was itself so strong that even the protocol of this pilot randomized control trial got published in a very good journal. And then later on, after finishing of the trial, we have also been able to publish our outcome data. So we had this 1 hour class. First part would be warm up. Second part would be main session where patient would be offered dance or music therapy. And the last part would be meditation. And what did we find?
that patients who underwent intervention had a reduction in their UPDRS score. UPDRS is a Parkinson's disability score, and they had reduction of 2 points in that versus patient who had not undergone dance or music therapy had progress of the disease. Same thing, quality of life. This is quality of life score, PDQ 39. That also improved in the patients undergoing therapy versus not undergoing therapy. The patients not undergoing therapy, their quality of life worsened. We also analyzed today morning when I was doing a consultation, someone was asking me, what happens to the caretaker? Have you analyzed any time about the what happens, impact it has on the caretaker? Yes, we have analyzed. Deep brain stimulation has been shown to benefit not only the patient but also the caregiver. Similarly, this dance and music therapy also help to improve the quality of life of the caregiver. And then these are several tests which are balance and memory tests, and all of them showed positive impact following dance and music therapy. So that is what we advocated for that. Apart from this, memory, balance, overall well-being, and Parkinson's disease motor disability, there are psychiatric comorbidities in patients of Parkinson's disease, and that too also had shown marginal benefit with this therapy. So what was this therapy of? So this was the typical therapy session looked like. So people who were interested in music would continue with music. People who wanted dance continue to go for dance. So it was based on the patient's preference, not the doctor's preference. This is a typical dance session. All this study was supervised by the doctors. So that was about early Parkinson's disease. And I think this one should continue. We all know the physiotherapy helps, but the problem is that physiotherapy is very monotonous. People get tired and it feels like doing a medicine. Whereas dance and music with meditation is something which makes you feel happy, which comes from within, and it would also help you engage it for a longer time. Now we come to deep brain stimulation surgery. And there has been a discussion all around the world as to whether the deep brain stimulation has any neuroprotective effect. What is the meaning of neuroprotection? Neuroprotection का मतलब ये है कि आपके सेल्स को जो डोपामिनर्जिक सेल्स डीके हो रहे हैं, डाई कर रहे हैं, मर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करके बचा सको. एंड ये वर्ल्ड ओवर ये डिस्कशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 2018 से डिस्कस हो रहा है. देन देयर इज अ पेपर फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन इन 2022. द फर्स्ट पेपर वाज फ्रॉम कनाडा एंड दिस आर वेरी सीनियर पार्किंसंस रिसर्चर. उन्होंने भी बताया कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कैन कॉज प्रोवाइड न्यूरो प्रोटेक्शन. एंड रिसेंटली फ्रॉम नेदरलैंड्स, सो फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, सब लोग सोच रहे हैं कि भाई ये इसका फायदा कैसे लिया जा सकता है और इसमें एक्चुअली कोई वजूद है कि भाई डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी के बाद पेशेंट्स का पार्किंसन डिजीज का प्रोग्रेस कम हो सकता है या स्लो हो सकता है. तो हमारे पास क्या क्या एविडेंस है? सो दिस इज साइंटिफिक लैंग्वेज, बट मैं आपको समझाता हूं. दे gave deep brain stimulation surgery to mouse or rats who had been made Parkinsonian. तो पार्किंसंस डिजीज किया गया था रैट मॉडल में. पहले इसको इंड्यूस किया गया और फिर स्टिमुलेशन दिया गया. तो दे फाउंड दैट द सबस्टेंशिया नाइग्रा सेल्स वेर protected, or the decay or the degeneration of those cells were not as bad. Then they did this same therapy for monkeys, because rat model is a small model. The closest to human is monkey model called primate model. And it was shown that ST and deep brain stimulation had limited the neuronal loss in substantia nigra part reticulata, जो जहां पे सबसे ज्यादा सेल्स डाई होते हैं और जिसकी वजह से डोपामिन कम हो जाता है, उसको उसने प्रोटेक्ट किया आफ्टर
अंडरगोइंग डीबीएस। तो पेशेंट को पहले पार्किंसंस बनाया गया, सॉरी, मंकीज को पहले पार्किंसंस बनाया गया और उसके बाद डीबीएस किया, तो उन्होंने देखा कि इसका प्रोग्रेस स्लो हो गया। दूसरा इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये देखा कि ये अगर जल्दी किया जाता है, पार्किंसंस होने के बाद तुरंत, इफ यू इंड्यूस पार्किंसोनिज्म इन मंकीज and you apply deep brain stimulation early, then this is effective. थोड़ा टाइम के बाद अगर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करते हो तो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो उसका मैसेज क्या है कि अर्ली डीबीएस मे आई एम नॉट क्लेमिंग बट इट मे हेल्प इन प्रोटेक्शन, न्यूरो प्रोटेक्शन। और उसका थियरी इस तरह से है कि बेसिकली अपने ब्रेन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोकेमिकल्स बनते हैं। वन ऑफ देम इज ग्लूटामर्जिक विच इज डिस्ट्रक्टिव। तो ये ग्लूटामर्जिक प्रोजेक्शन सबथैलेमिक न्यूक्लियस का कम करते हैं। दूसरा, न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, आजकल हम सब बातें करते हैं विटामिन की, ट्रॉफिक फैक्टर्स, सुपर फूड्स, ये सब की बातें आजकल चल रही है। तो सेम थिंग ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर होता है कि जो ब्रेन को स्टिमुलेट करता है या ब्रेन के सेल्स को ग्रोथ करता है या ब्रेन के सेल्स को डेथ, मरने से बचाता है। इट इज कॉल्ड, one of them is BDNF, brain derived neurotrophic factor, and this is been found to be increased in patients who have undergone deep brain stimulation. So indirect evidence है अपने पास कि ये बताता है कि deep brain stimulation may help to improve the quality of life and cause neuroprotection. So that was about slowing down the patients and progress of Parkinson disease. Once again, I remind you to join the Just Look DBS channel where all the questions will be answered. There is a special discount. So if you join the Paresh Doshi webinar group, you would always be able to get this benefit of the discount in either consultation, treatment, or investigations at Just Look Hospital. नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी पेशेंट्स पूछना चाहते थे, लोगों ने इधर चैट में भी पूछा है कि हाउ लॉन्ग द इफेक्ट ऑफ डीप ब्रेन स्टिमुलेशन लास्ट, व्हाट हैपेंस विद पार्किंसन डिजीज विद एंड विदाउट डीबीएस, एंड व्हाई एम आई लूजिंग ऑल द इंप्रूवमेंट ऑफ डीबीएस दैट आई वंस रिसीव्ड। ये सब के क्वेश्चंस है कि भाई पहले डीबीएस किया था, शुरू में फायदा हुआ था, अभी नहीं हो रहा है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन मैं तो करा तो लूंगा, लेकिन कब तक मेरे को अच्छा रहेगा। एंड कोई कोई पेशेंट को फायदा इनिशियली हुआ था, अभी खराब हो गया है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट हैपेंस टू पार्किंसंस डिजीज ओवर ईयर्स। हमको ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम बेसिक चीज को जानते नहीं है तो इसका बेनिफिट क्या है वो नहीं बता सकते। सो वी हैव टू लुक इनटू दिस एंड सी। सो व्हाट हैपेंस टू पार्किंसन डिजीज आफ्टर। सो लुक एट दिस ग्राफ कि जिसमें अर्ली स्टेज ऑफ पार्किंसन डिजीज है। और ये जो भी पार्किंसन डिजीज पेशेंट्स ये सुन रहे हैं उनको पता चलेगा, शुरू में मोटर सिम्टम्स रहते हैं, रिजिडिटी, ट्रेमर, ब्रेडिकाइनेसिया, स्लोनेस, और ये सब लीवोडोपा को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे जैसे रोग आगे बढ़ता है, ये टाइम ग्राफ है नीचे, तो ये जैसे मिड स्टेज ऑफ पार्किंसन डिजीज आते हैं तो तकलीफा बढ़ जाती है, फ्लक्चुएशन होता है, गेट में चलने में दिक्कत आती है, स्पीच बिगड़ती है, स्वॉलोइंग बिगड़ता है, आवाज डाउन हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है। और इन सबको लीवोडोपा से अलग अलग मात्रा में फायदा मिलता है। एंड द लास्ट इज एडवांस पार्किंसन डिजीज, जहां पे बहुत सारी तकलीफें आती है, बैलेंस बहुत बिगड़ जाता है, मेमोरी डिसफंक्शन होता है, हेल्यूसिनेशंस होते हैं, भास होता है, पेन, फटीग, स्लीपीनेस, खाने में तकलीफ, यूरिनरी डिसफंक्शन। एंड ये सब चीजें बहुत ही कम मात्रा में लीवोडोपा से फायदा पा सकती है। तो हर एक तबक्के में, हर एक स्टेज पे हमको किस तरह से फायदा लेना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। ये दूसरा ग्राफ है, ये सिंपल ग्राफ है जो बताता है कि अर्ली स्टेज में हमको ये सारा फायदा था। लाल जो है वो खराब हालत है, ग्रीन है वो अच्छी हालत है। तो यू कैन सी दैट द गुड पार्ट keeps on narrowing down as the disease progresses, and off period, which is at the bottom, keeps on increasing, and side effects keep on mounting. So at the late stage आपके पास बहुत ही कम समय अच्छा होता है, बाकी का समय परेशानियों में गुजारना पड़ता है। सो
ये पेपर था क्लिनिकल पार्किंसोनिज्म में, नेचुरल हिस्ट्री एंड पैटर्न ऑफ ट्रीटमेंट चेंज ऑफ पार्किंसन डिजीज। द ऑथर्स शोड कि पार्किंसन डिजीज एक इवॉल्विंग फिनोमिना है, वो हर बार हर तबक्के में चेंज होती है। हर बार यही जो पहले 4 साल में चलती थी वो दवाई नहीं चलने वाली है। पहले 4 साल में हम जो स्टिमुलेशन देते थे, या पहले 5 साल में डीबीएस के बाद हम प्रोग्रामिंग करते थे, वो दूसरे 5 साल में काम नहीं आने वाला है, वो टोटली चेंज हो जाने वाला है। एंड हर एक तबक्के में, हर एक स्टेज पे वी हैव टू गिव अ बेटर एंड एन इम्प्रूव्ड outcome to the patient as much as it is possible in our hands. This is a beautiful paper from Italy. Challenges in the Parkinson disease management after deep brain stimulation. सब लोग को मालूम है ये, बट बहुत कम लोगों के पास इसका जवाब है। जवाब क्यों नहीं है? क्योंकि मेहनत नहीं है। इफ यू हैव पुट इन एफर्ट टू अंडरस्टैंड, इफ यू हैव गॉट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, ये सवालों का जवाब मिल सकता है। हमने आइडेंटिफाई किए है, दिस आर द इश्यूज दैट वी हैव फाउंड। मैंने जैसे अभी बताया, डिजीज चेंजेस ओवर एवरी फ्यू इयर्स। हर 4 साल 5 साल में डिजीज का पैटर्न चेंज होता है। पहले स्लोनेस का तकलीफ था, हैंड राइटिंग की कंप्लेन करते थे। 10 साल के बाद कोई हैंड राइटिंग की बात भी नहीं करता है। अरे सर, मैं 15,000 प्रॉब्लम से परेशान हूं, मेरे को चलना नहीं होता है, बैलेंस जाता है, आई कैन नॉट टॉक। what he is not bothered about handwriting, he is wanting these things to be improved। मेरे को नींद नहीं आती है, मेरे को हेलुसिनेशंस होते हैं। तो ये सब का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? और हर एक पेशेंट, जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट वेबिनार में मैं डिस्कस करूंगा कैसे हर एक पार्किंसन डिजीज के पेशेंट को सबसेट्स में डाला जा सकता है, अलग अलग पॉकेट्स में डाला जा सकता है, क्योंकि हर एक का ट्रीटमेंट अलग तरह से किया जाए, और इस तरह से किया जाए ताकि उनको लंबे समय तक हम अच्छा रख सकें। फॉर एग्जाम्पल, इन कोलिनर्जिक पेशेंट्स ऑफ कोलिनर्जिक पार्किंसंस डिजीज में अगर एक प्रकार की ड्रग देता हूं तो उनका मेमोरी लॉस फटाफट फटाफट हो जाएगा। और अगर डॉक्टर को मालूम नहीं है तो ये तो कॉमन ड्रग है, तो वो तो दे देंगे, जैसे ही पेशेंट आता है पहले ही दे देते हैं। बट उन्होंने पता नहीं किया कि इसको कोलिनर्जिक है कि डोपामिनर्जिक है कि सीरोटोनर्जिक है पार्किंसन। तो कौन सी प्रकार का पार्किंसन है? अगर गलत प्रकार के पार्किंसन में गलत प्रकार की दवाई दे दी तो मुश्किल होने वाला है। एंड आगे जाके डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के बाद तो और तकलीफ होने वाली है। सो दिस आर द क्वेश्चंस दैट वी हियर, एंड आई विल शो यू सम ऑफ द एग्जांपल्स कि कैसे इसको फायदा लिया जा सकता है। सो डीबीएस सर्जरी के बाद अगर आपको फायदा नहीं मिला है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, मैनी रीजंस। फर्स्ट, आई एक्सप्लेन टू यू प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज। पहले हमने बात किया इनकरेक्ट प्रोग्रामिंग। अगर आप पेसमेकर सही तरह से चला नहीं पाते हो तो आपको कोई फायदा मिलने वाला ही नहीं है। गलत पेसमेकर, वो अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट पेशेंट स्लाइड में कि अगर पेसमेकर में एक क्षमता नहीं है तो आप क्या करोगे। इफ द कैपेबिलिटी इज नॉट देयर इन द पेसमेकर, अगर आप मारुति 800 लेके हिमालय रैली में जाओगे तो क्या होगा? वापस ही आओगे। मारुति 800 कैन नॉट क्लाइम हिमालय, यू रिक्वायर अ 4 व्हीलर। सो इफ यू डू नॉट नो द राइट tool or the right equipment or the right pacemaker for the right problem, then you are going to stuck। और लास्ट में अगर सर्जरी सही नहीं हुई है तो, अगर सर्जरी सही नहीं हुई तो सब चीजें तुम्हारे पास है तो भी नहीं चलने वाला है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्जिकल एक्सपर्टीज टू पुट एन इलेक्ट्रोड विथ एन एक्यूरेसी ऑफ 2 मिलीमीटर, एंड दैट इज नॉट एन इजी टास्क एंड नॉट अ कॉमन टास्क। एंड लास्ट में ये सब चीजें सही भी हो, जानकारी भी हो, जैसे हमारे सेंटर में है, अगर आदमी को सही तरह से बताया नहीं गया है और उसको फॉल्स एक्सपेक्टेशन है, उसकी उम्मीदें गलत है, तो डॉक्टर परेश दोषी या डॉक्टर ABC इज नॉट गॉड। दे कैनॉट डिलीवर एवरीथिंग। सो कोई चीज मैं भी नहीं ठीक कर सकता हूं, तो पहले ही बता देते हैं हम कि भाई ये ठीक नहीं होगा और आपको पता चलना है। दूसरा, ओवरऑल हेल्थ आपकी डाउन है कोई अदर रीजंस के वजह से, तो देन ऑल्सो यू विल सफर। सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू। So let us see a patient called Samir Ghosh, and we'll see how this is helping. So this patient had undergone surgery, had been suffering from Parkinson disease 11 years. He had undergone bilateral deep brain stimulation surgery in another center. 500 ग्राम लिवोडोपा लेता था, प्रामीपैक्स भी लेता था। थोड़े टाइम पार्किंसंस का अच्छा गया डीबीएस के बाद, उसके बाद चालू हो गई तकलीफ, रिजिडिटी बढ़ गई, ट्रेमर बढ़ गई, ब्रेडिकाइनेसिया बढ़ गई, बोलने में दिक्कत आने लगी।
अनेबल टू डू रूटीन डेली वर्क, हेल्यूसिनेशंस, सब कॉमन प्रॉब्लम्स जो पहले थे वो वापस आ गए। वो बहुत अपसेट हो गया। ही केम टू अवर सेंटर सेइंग कि भाई सर हमारे इलेक्ट्रोड गलत होंगे, हमको रिप्लेस कर दो। हमने असेस किया एंड देन वी डीड अ रीप्रोग्रामिंग। तो ये हमने ऑफ मेडिकेशन, दवाई भी बंद है, स्टिमुलेशन भी बंद है। तो आप देखोगे ये प्रॉब्लम्स क्या है उसके। ये आगे फॉरवर्ड आप करके उठिए। हाँ, उठने में दिक्कत है, बैठिए। वापस उठना है आपको और चलना है। उठ के खड़े रह के चलना है। देखो कितना टाइम लगता है उसको। चलिए, घूम जाइए, घूम जाइए। नाउ वी प्रोग्राम हिम, और हमने प्रोग्रामिंग किया तो अच्छा तो हो गया, लेकिन ज्यादा ही कुछ अच्छा हो गया। Now, is on medication and on stimulation with increased current. He's having dyskinesia. Dyskinesia of the organs. আগে তো বলো ওয়েডনেসডে থার্সডে ফ্রাইডে সাথে বলো ওয়েডনেসডে থার্সডে तो ये डिस्काइनेसिया हो गया, तो अभी क्या करना है? तो वी अगेन रीप्रोग्राम्ड हिम। Now he is on medication, on stimulation, but the stimulation current has been reduced by 5 parts, and there is, we'll look for dystonia whether it is coming or not. Dyskinesia, we'll look for dyskinesia. To control that, to reduce the dyskinesia, we have reduced both the side current parameters. So now there is no dyskinesia. अभी dyskinesia नहीं है तो आपको कैसा लग रहा है? স্কেনেশিয়া বিনা ঠিক লাগবে যাচ্ছে स्पीच भी अच्छा हो गया उसका। संडे मंडे बोलिए। সানডे মানডे ट्यूसडे वेडनेसडे So this is what a program reprogramming can do, even if the DBS has not been done effectively. This is another patient wherein we had to use another strategy. Again, operated at some other center. He started with Parkinson disease, typically with left leg tremor, etc., etc. He underwent a deep brain stimulation with one of the pacemakers. As I told you, correct selection of the pacemaker is very vital for the type of the disease that you are going to treat or what you would be expecting later on. पेशेंट्स को आगे जाके क्या दिक्कत आएगी उसी के ऊपर पेसमेकर सिलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो ये तो जो भी पेशेंट आया, जो डीबीएस का पेसमेकर अवेलेबल था वो कर दिया किसी ने, और 2023 में ऑपरेट हो चुका। देन आफ्टर 3 months ऑल हिज सिम्टम्स केम बैक। इन May 2024 ही कंसल्टेड अवर सेंटर आफ्टर 1 साल फॉर रीप्रोग्रामिंग, बिकॉज थक गया था वो जा जाके। वी स्टार्टेड इवेल्युएटिंग बाय पेशेंट हिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग के भाई उनको पहले से क्या दिक्कत थी, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, कितना इंप्रूवमेंट हो सकता है। वो बहुत सिस्टमेटिक इवेल्युएशन मेथड है। ऑलमोस्ट इट टेक्स 3 days फॉर अस टू फाइनली इवेल्युएट एवरीथिंग। हमने उसका पूरा पहले पहले का एमआरआई भी देखा, कहाँ पे ब्रेन है, कहाँ पे लीड है, कहाँ पे टारगेट है, सब देखा। और हमने चेक किया तो हमको पता चला कि इसके इलेक्ट्रोड सही जगह पे नहीं है। तो ये जो व्हाइट कलर आप देख रहे हैं वो इलेक्ट्रोड का पोजीशन है, और ब्लू और रेड एरो देख रहे हैं वो एक्चुअली वेयर इट शुड बी। सो खाली फर्क 2 मिलीमीटर का ही है, 19-20 का फर्क है, लेकिन पेशेंट को नो इंप्रूवमेंट, फायदा ही नहीं है, पेशेंट इज अपसेट। सो व्हाट डिड वी डू? वी अंडरस्टूड कि भाई ये पेसमेकर ए में तो मेरे पास क्षमता नहीं है कि मैं इसको ठीक कर सकूं, इसको यूज करके। इलेक्ट्रोड गलत जगह पे है, लेकिन मेरे को प्रोग्रामिंग से ठीक करना है। तो हमको कैसा करना है? तो वी स्विच्ड ओवर टू अनदर पेसमेकर विच हैड बेटर कैपेबिलिटी, एंड दिस इज व्हाट यू सी आफ्टर दैट। You will check the speech and get a Parkinson. Sunday, Monday बोलिए। संडे मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे। ये बिफोर प्रोग्रामिंग। बोलने का दिक्कत है, चलने में बैलेंस जाता है, गिरने की संभावना है। नाउ आफ्टर प्रोग्रामिंग, दिस इज द न्यू प्रोग्राम, प्रोग्राम 4। Check the speech, get a Parkinson. Sunday, Monday बोलिए। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे
Friday, Saturday. This would not have been possible with the pacemaker that he had. पीस थोड़ा क्लियर है और वॉक में जो पहले थोड़ा गिरने का चांसेस था और नहीं लग रहा है कि मैं गिर जाऊं. So this is the level of improvement that he gets. So this is what can be done and achieved for patients who have undergone DBS and not getting benefit and successfully treated. Yeah. So now coming back again, reminding you to join this Just Look DBS channel and also join the webinar group to avail this discount of 50% for various treatment options. Important question. Everybody wanted to understand from me as to which pacemaker one should go. Sir, you just now told कि एक पेसमेकर से अच्छा नहीं होता है, दूसरे से अच्छा होता है. अभी मार्केट में चार चार पांच पांच प्रकार के पेसमेकर है. These are the two common pacemakers that are available. There are a couple of other companies pacemaker are available which are not so common. So मैं उनके बारे में बात नहीं करने वाला हूं. But मेरे पास एक सिंगल आंसर नहीं है. One size does not fit all. The therapy has to be tailor made और मैं next few slides में आपको वो बताऊंगा. This is a paper from Florida. Michael Okun is one of the biggest researcher in the field of Parkinson's disease और ये Michael Okun की टीम का पेपर है. And they also talked about patient, target, device and program selection in DBS patients. It is not simple as you would think. It starts with understanding age, sex, relations, किस में कितना होता है, कौन से एज पे आप कराते हैं, आप कौन से सेक्स का है, मेल है फीमेल है, वेरियस थिंग्स, सोशल सपोर्ट है कि नहीं, रिस्पॉन्स टू लिवोडोपा. ये लिवोडोपा चैलेंज टेस्ट है जो सब सेंटर में होता है एंड दैट इज इंपॉर्टेंट. इट प्रिडिक्ट्स द आउटकम ऑफ पार्किंसन डिजीज. देन टाइमिंग ऑफ डीबीएस, वी विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स. कितना जल्दी किया, कितना लेट किया, कितना लेट किया तो क्या दिक्कत आएगी, कौन सी चीज अच्छी होगी, कौन सी चीज अच्छी नहीं होगी. तो ये सब चीज. नॉन मोटर सिम्टम्स, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बिहेवियर का प्रॉब्लम, यूरिन का प्रॉब्लम, स्लीप का प्रॉब्लम, डिप्रेशन का प्रॉब्लम, फटीग का प्रॉब्लम, ये सबको कौन ठीक करेगा. ट्रेमर ठीक हो गए, रिजिडिटी ठीक हो गई, ब्रेडिकाइनेसिया ठीक हो गया, बट ये सब प्रॉब्लम तो मेरे को ज्यादा तकलीफ देते हैं, उसको कौन एड्रेस करेगा, उसके लिए क्या इलाज है. देन अगर उससे भी आपका थोड़ा डिजीज एडवांस है तो बैलेंस एंड गेट प्रॉब्लम, चलने में गिर जाते हो, खड़े नहीं रह सकते हो. एंड देन जेनेटिक है, कोमॉर्बिडिटी है, सोशल सपोर्ट, ये सब मिला के फाइनल डिसीजन लेते हैं. जब भी डिसीजन लेते हैं तभी बताते हैं कि आपको क्या लगेगा, क्यों लगेगा और किस तरह से आपको इसका फायदा मिल सकता है और आप आगे जाके क्या एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि कल के लिए तो अपने पास सॉल्यूशन है. जैसे ही डीबीएस किया आप अच्छे हो जाओगे. लेकिन मैंने दो पेशेंट आपको बताए, किसी को 1 महीना 3 महीना चला फायदा, किसी को 1 साल चला, बट अल्टीमेटली द डिजीज प्रोग्रेस एंड द डॉक्टर्स treating were not able to handle that, so the patients had to come to Just Look for getting better benefit. उसके ऊपर इतनी तकलीफों के ऊपर वापस ग्लोबस पैलिडस में करो या सबथैलेमिक न्यूक्लियस में करो, उसी के लिए भी अलग अलग डिजीज पैटर्न्स है. कौन सा टारगेट सिलेक्ट करेंगे, हर एक टारगेट का अलग अलग फायदा है. कौन से पेशेंट को कौन सा टारगेट सिलेक्ट करेंगे. अगर आपका सेंटर जो जहां पे डीबीएस कराते हैं उसको सब टारगेट्स का इक्वल एक्सपीरियंस नहीं है और कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ही इज गोइंग टू गिव यू द सेम थिंग. अगर आप लुई फिलिप के शर्ट शोरूम में जाओगे तो आपको एरो का शर्ट का कोई इंप्रेशन ही नहीं बताएगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है एरो में शर्ट बनता है कि नहीं बनता है. बट आप मल्टी ब्रांड शोरूम में जाओगे, शॉपर स्टॉप जैसा, तो वहां पे लुई फिलिप भी बताएगा और बोलेगा अच्छा तुमको ये पसंद नहीं है, तुम बाजू में देखो एरो का भी है, उसके बाजू में इसका भी है, उसका भी है, उसका भी है, लिवाइस का है, आप देख लो कौन सा पसंद आता है. ही इज नॉट बॉदर्ड बिकॉज ही नोज कि आप कोई भी एक सिलेक्ट करोगे. तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चेक कि आपका सेंटर के अंदर कितना एक्सपर्टीज है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना नॉलेज है, बिकॉज ये सब चीजें एक बार लाइफ में होती है, दूसरी बार नहीं हो सकती है. एक बार मिस्टेक तो लाइफ लॉन्ग यू सफर. नाउ वी कम टू द डिस्कशन अबाउट व्हाट आर द पॉइंट्स. इवन ये पेपर जो इतना डिटेल था फ्लोरिडा का, वो भी कवर नहीं किया. एज ऑफ द पेशेंट का क्या रेलेवेंस है, अंडरस्टैंडिंग द एक्सपर्टीज ऑफ द सेंटर, ये लोग तो समझते भी नहीं है कि एक्सपर्टीज का कितना इंपॉर्टेंस है. एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द पेशेंट,
पेशेंट स्पेसिफिक गोल, पेशेंट को क्या चाहिए, टीचर को आवाज चाहिए, फार्मर को मोबिलिटी चाहिए, हाउसवाइफ को इंडिपेंडेंस चाहिए, ट्रेमर कंट्रोल चाहिए, उसको ट्रेमर ट्रेमर जरा भी नहीं चाहिए सर, ट्रेमर बंद। तो हर एक का एक्सपेक्टेशन रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, एंड इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैट, यू जस्ट गिव वॉट एवर इज अवेलेबल टू यू एंड फिनिश द जॉब। फिर बाद में देखा जाएगा, पेशेंट जिधर जाना जाएगा, अपने को क्या फर्क पड़ता है। सो लेट अस टॉक अबाउट विच पेसमेकर, रिचार्जेबल वर्सेस नॉन रिचार्जेबल, दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। MRI compatibly, some pacemakers are compatible for half the body, some patient pacemakers are compatible for the entire body। आपका डिजीज आगे जाके क्या होगा, आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको कितना जल्दी स्पाइन का MRI की जरूरत पड़ेगी कि हिप का जरूरत पड़ेगी, उसके ऊपर भी एक डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम बनता है। गेट एंड बैलेंस प्रॉब्लम, अगर किस तरह के गेट एंड बैलेंस प्रॉब्लम है आपको, उस तरह से मेरे को पेसमेकर सिलेक्ट करना है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन वाला पेसमेकर लूं, एनोडिक स्टिमुलेशन वाला लूं, इंटरलिविंग कैपेबिलिटीज वाला लूं, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन वाला लूं, 100 different combinations are there। It only depends on the patient and his requirement and आपका क्या expectation है। For example, motor fluctuation versus tremor versus great disturbance versus speech, कोई भी इश्यू, कौन सा इश्यू मेरे को सॉल्व, मोटर फ्लक्चुएशन के लिए मेरे को ए पेसमेकर लगेगा, ट्रेमर के लिए ABC कोई भी अच्छा चलेगा, ट्रेमर पर प्लस गेट के लिए B लगेगा, स्पीच और इश्यूज के लिए B लगेगा। हर एक के लिए मेरे को टेलर मेड सॉल्यूशन लाना है और बताना है पेशेंट को। उसके बाद और चीजें आती है पेसमेकर सिलेक्शन में, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग, नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग, लिमिटेशंस ऑफ रिकॉर्डिंग, एप्लीकेशंस ऑफ रिकॉर्डिंग इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। 2 लीड वाला DBS है, 4 लीड वाला है, मेरे को 4 लीड का जरूरत है तो मेरे को अलग पेसमेकर यूज करना पड़ेगा। एक एरिया को स्टिमुलेट करना है, 2 एरिया को स्टिमुलेट करना है, कई कई पेशेंट्स की तकलीफों के लिए मेरे को 2 एरिया स्टिमुलेट करने पड़ते हैं। Now, every pacemaker doesn't give me that benefit. But before doing surgery, अगर मैंने ये सोचा नहीं है, और जैसे मैंने बताया आपके अगले पेशेंट को, you are stuck with the pacemaker, what do? Patient will not get the benefit, पेशेंट को फायदा नहीं होगा और पेशेंट भटकते भटकते दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। So that is not the thing that you. Then comes future consideration, ये तो आज की बात हुई, आगे जाके क्या होगा, ये सबका नॉलेज है कि नहीं, रिमोट प्रोग्रामिंग का कैपेबिलिटी, एडवांस प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम्स लाइक क्रोनो रीसेट, ये मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग मेथड है कि जिससे हम लॉस्ट इंप्रूवमेंट कैन बी कैप्चर्ड। सेल स्पेसिफिक स्टिमुलेशन, ये भी तुरंत थोड़े समय में आने वाला है कि मेरे को कौन से सेल को कितना स्टिमुलेट करना है। Anodic stimulation, multiple things. So it is not a easy decision. I cannot give an easy answer. Many patients ask कि सर मुझे कौन सा लगेगा, अरे ये कोई फोन पे बताने की बात नहीं है। It requires a one-to-one discussion. It requires 45 minutes, 1 hour consultation where we talk about it, understand each other, and then I can find out what is more suitable to you, and then explain to you कि भाई आपको इस तरह से मैं सोच रहा हूं, अगर आपकी सोच में कुछ और है तो हम वो कर सकते हैं। Once again, reminding you to join the Justlook DBS channel. Not only that, avail this special discount offers that is available from Justlook by joining the Dr. Paresh Doshi's official webinar group. We now talk about the timing of deep brain stimulation surgery. कभी कराना चाहिए? तो सबसे पहले young Parkinson's patients from the age of 40, it is called young onset Parkinson's disease. This is a very interesting paper produced by Andrea Kohn from Germany in 2022. And they showed कि 46 patients को उन्होंने एनालिसिस किया, उसमें से 15% जेनेटिक थे, 16% of the patients had reduction in the levodopa dose after surgery, which is very important because young patients में हमको levodopa reduction बहुत जरूरी है। 35 to 70% of the benefit था, average 52% improvement था, and 80% improvement in quality of life. So the bottom line, अगर आपकी उम्र 40, 45, 50, 55, 35 जो भी है और आपको पार्किंसन डिजीज है और आप मोटर फ्लक्चुएशन से सफर करते हो, तो डू नॉट डिले द सर्जरी, get the surgery done early because your quality of life will significantly improve. There is no point in suffering. The second comes with advanced age, 70 year. My father is 70-year-old.
Is it safe to undergo surgery? And we conducted a research study to understand that. And this is not today's research study. This was done many years back in 2017 or 18. And we conducted this study, which was published in Journal of Clinical Neuroscience. 40 patients were randomized between early and patients below 65, patients above 65. And we found that the improvement जो था Parkinson's में immediately after surgery, after 1 year of surgery, and after 2 years of surgery remained the same. Blue shows improvement in young patients, red shows improvement in old patients. And you can see कि दोनों का level same है. That means both of them had equal improvement over a period of time. ये मोटर यूपीडीआरएस है, मोटर पार्किंसंस डिसेबिलिटी स्कोर है, जो मोर स्पेसिफिक ट्रेमर रिजिडिटी ब्रेडिकाइनेसिया को एड्रेस करता है, वो भी सिमिलर था. लिवोडोपा रिडक्शन ऑल्सो वॉज मोर और लेस सिमिलर, and quality of life improvement also was similar. So medical reduction, motor improvement और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट, तीनों चीज यंग और एल्डरली में सेम थे. ये पेशेंट है एल्डरली पेशेंट. जैसे मैंने बोला, टारगेट तुमको आना चाहिए, सिलेक्ट करना है. हम कॉमनली सब थैलेमिक न्यूक्लियस डीबीएस करते हैं. ये पेशेंट के लिए हमने जीपीआई डीबीएस किया था, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस. यू सॉ दैट इन दैट डॉक्टर माइकल ओकुन अपर्णा वागले स्लाइड that there were two targets, subthalamus and GPI. So he has undergone GPI stimulation before surgery. Fast. ऊपर, हाथ ऊपर ले जाओ. पास पढ़ाए ना है. बदल में हो सकता पर मत वजन दे दो. एकदम नॉर्मल साइड रखो, पकड़े रखो. चलो, हाँ काका. और ये आफ्टर सर्जरी. डॉक्टर बोलो. हाँ, बीजो आती करो. मुट्ठी खोल बंद करो. जो आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता था, वो अपने आप अभी चलता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मेरे को पार्किंसंस डायग्नोस हो गया है. हाउ मच अर्ली आई कैन अंडरगो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी? मैं कितना जल्दी ये सर्जरी करा सकता हूँ? सर, आपने थोड़ी देर पहले बोला कि डीबीएस के बाद न्यूरो प्रोटेक्शन मिलता है, ब्रेन सेल्स डेड होना कम हो जाते हैं, मुझे लंबे समय तक थोड़ा बेनिफिट मिलेगा. तो कितना जल्दी कर सकते हैं? जैसे मैंने शुरू में बताया था, कोई भी चीज मेरे ABC डॉक्टर के तजुर्बे से नहीं चलती है दुनिया में. साइंटिफिक एविडेंस चाहिए, और वो पर्टिकुलरली ट्रायल और रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से ही मिला जाता है. तो इसके लिए भी फ्रांस में 7 सेंटर्स मिलके ये ट्रायल किया गया था. अर्ली स्टिम स्टडी 2013 में पब्लिश हुई थी. 251 पेशेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स. 124 पेशेंट को सर्जरी किया गया, 127 को मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया. जिसका सर्जरी हुआ उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ 24% इंप्रूवमेंट हो गया. जिसका सर्जरी नहीं हुआ, मेडिकल ट्रीटमेंट गया, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ 1% वर्स हुआ. पार्किंसंस डिजीज कोर्स इंप्रूव्ड बाय 53%. 53% इंप्रूवमेंट था. जिसका सर्जरी हुआ, खाली मेडिकल ट्रीटमेंट में खाली 2% इंप्रूवमेंट हुआ था. Similarly, medical drug reduction was almost 40% in patients undergoing surgery, whereas जो मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे थे उसका 20% ड्रग इंक्रीज हो गया, क्योंकि डिजीज तो प्रोग्रेस होता है. कंक्लूजन में क्या आया? न्यूरोस्टिमुलेशन इन कॉम्बिनेशन विथ मेडिकल थेरापी कैन देयरफॉर इंप्रूव मोटर सिम्टम्स बेटर देन मेडिकल थेरापी अलोन. खाली मेडिकल थेरापी से सर्जरी प्लस मेडिकल थेरापी का बहुत ही ज्यादा फायदा है. एंड इसी की वजह से यूएस एफडीए ने 2013 में इसको अप्रूवल दिया फॉर पार्किंसन डिजीज विद अर्ली मोटर फ्लक्चुएशन. तो आपको पार्किंसन डिजीज है और आपको दवाई के मामूली से भी साइड इफेक्ट आ रहे हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड है, आपका जॉब खतरे में है, या तो आप पार्किंसंस की वजह से रिटायर होने की बात कर रहे हैं, या तो पार्किंसंस की वजह से जॉब में
इंक्रीमेंट लेने की ना बोलते हैं कि वो अगर मैं हायर पोजीशन में जाऊंगा तो मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा और मुझे तो पार्किंसन से मेरे को नहीं लेना है। थिंक ट्वाइस, बिकॉज डिजीज के साथ तो आपको जिंदगी भर जीना है। अगर आप डीबीएस करा सकते हैं और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं तो इट वुड बी वेरी यूजफुल, एंड आई विल शो यू प्रैक्टिकली कि ये 2013 में पब्लिश हुआ था लेकिन हम 2004 से ये काम कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं वो भी मैं प्रूव करूंगा। ये मेरा टॉपिक था, एक डिबेट थी वेर इन डीप ब्रेन स्टिमुलेशन इन अर्ली मोटर फ्लक्चुएशन। मैंने बताया था कि करना चाहिए, और ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास डेटा था। ये पेशेंट्स, 5 पेशेंट्स का डेटा था उस टाइम पे, 2009 की बात कर रहा हूं, जहां पे डीबीएस के बाद 41% इंप्रूवमेंट वी हैड बीन एबल टू सी इन पेशेंट्स विद अर्ली पार्किंसन डिजीज। ये पेशेंट गायनेकोलॉजिस्ट थे, 53 साल के, और देखो आप, ट्रेमर था, इसकी वजह से वो सर्जरी नहीं कर पाते थे। सो ही डिसाइडेड टू अंडरगो सर्जरी कि भाई मेरा तो प्रोफेशन ही बंद हो जाएगा, कोई इतना ट्रेमर वाले डॉक्टर के पास कौन ऑपरेशन कराने वाला है। ये बिफोर सर्जरी का वीडियो है। काफी स्लोनेस है, ट्रेमर है, रिजिडिटी है। और ये पेशेंट आफ्टर सर्जरी 1000 मिलीग्राम लिवोडोपा में से 500 मिलीग्राम पे आ गए, और ये खुद अभी ऑपरेशन करना चालू कर दिए। Once again, I advise you to join Jaslok DBS group YouTube channel so that you can be updated about all the latest developments. और ये स्पेशल ऑफर है डिस्काउंट का जो आप वेबिनार ग्रुप को ज्वाइन करके अवेल कर सकते हैं। द लास्ट 2 slides आर ऑन दिस क्वेश्चन बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग, सर सर्जरी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ये सेंटर में मेरे को कम मिलता है, ये सेंटर में मेरे को उससे कम मिलता है, ये सेंटर में थोड़ा बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं कहाँ से कैसे सिलेक्ट करूँ। और सबको इतनी कॉस्टली सर्जरी के लिए तो सब कॉस्ट इफेक्टिविटी तो देखते ही है। हम भी देखते हैं, शॉपिंग करते हैं, अमेजोन पे जाते हैं तो 3 बार देखते हैं कि भाई कहाँ पे सस्ता मिलता है। बट ये ब्रेन सर्जरी है, ये अमेजोन का शॉपिंग लिस्ट नहीं है। और दो में डिफरेंस है, एक में प्राइस है, एक का कॉस्ट है। और कॉस्ट और प्राइस के अंदर क्या डिफाइंड है वो मैं बताता हूं। द कॉस्ट इज डिफाइंड एज द टोटल कंसिडरेशन। कॉस्ट एक ऐसी चीज है कि जो टोटल चीज का आपको कितना खर्चा पड़ा वो है। प्राइस एक है कि ये एक टाइम पॉइंट पे आपने कितना खर्चा किया वो। तो सर्जरी के लिए मान लो कि आपने 100 रुपया खर्चा किया है, बट सर्जरी के बाद आपको ज्यादा ज्यादा खर्चा लगता है तो टोटल कॉस्ट आपकी बहुत बढ़ जाती है। वेरएस कॉस्ट एक बार सर्जरी के टाइम पे ज्यादा आ जाती है तो उसके बाद कम हो जाती है। तो मैं आपको बताता हूं कैसे इसका इफेक्टिविटी होता है। द कॉस्ट ऑफ सेफ्टी, पहले आपको देखना है कि आपके जो सेंटर में आप कराना चाहते हैं क्या उनका तजुर्बा क्या है, कितने सालों से कर रहे हैं, 200 300 400 ऑपरेशन किए हैं। ये कोई ब्रेन का ऑपरेशन है, पहले 5 ऑपरेशन वाले को देने के लिए मतलब नहीं है। पहले 100 ऑपरेशन किया है तो भी मैं जरूरी नहीं है। हमने देखा था कि हमारा रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस केम डाउन ओनली आफ्टर 200 सर्जरीज। Now, that experience is not possible with all centers. So it is important to select the center which has got good experience. कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, बार बार कितनी बार मेरे को ट्रैवल करना पड़ेगा, कितनी बार जाना पड़ेगा, कितनी बार मेरे को थेरेपी चेंज करनी पड़ेगी, कितनी बार मेरे को काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी, कितनी बार मेरे फैमिली के साथ मेरे को फ्लाइट लेके एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इफ यू लुक एट दिस, शुरू में प्राइस शायद एक सेंटर की ज्यादा भी हो सकती है, एक सेंटर की कम हो सकती है, बट अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ लाइफ टाइम विजिट, कॉस्ट ऑफ सेफ्टी एंड इंफीरियर आउटकम एंड कॉस्ट ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप सब इकट्ठा करते हो तो टोटल कॉस्ट में बहुत फर्क पड़ जाता है आपको, जो यू पे विथ योर ओन लाइफ एंड सेल्फ rather than saving on the price or the cost at one particular point in time. Once again, invite you to all these things, joining Jaslok DBS channel, YouTube channel, availing a special discount that we are offering for this webinar purpose also and for attendees of this webinar. And then by joining this Paresh Doshi webinar group, and
I will be now taking questions and answers. You can type your questions. I will try to answer the questions for next 15 to 20 minutes. After that, we will move to the session where I would be sending answering this through my Just Log DBS YouTube channel. So let me start. There have been hundreds of questions. So someone has asked, I doubt about the diagnosis of Parkinson disease. Is taking levodopa, still no symptoms except little gait, freezing. So diagnosis of Parkinson disease is a very important clinical diagnosis, and person should visit the doctor or a movement disorder specialist to confirm the diagnosis. What is the duration of this webinar? We have finished the webinar, so please pardon my ignorance. We have never been recommended a neurosurgeon. How does a neurosurgeon treatment differ from neurologist? It all depends on the expertise. You require to undergo treatment by a specialist who understands the disease. So yes, you are right. This is a medical disorder. Most of the people get treated by a neurologist or a movement disorder specialist. But at Just Look, we have been doing this. We have been the pioneer in this field. So we have been doing this. So we have a good understanding or knowledge. And because of our interest in research ki wajah se, we have a much better knowledge of medical treatment also when it is required. Last year, I went for a rechargeable DBS. Last week, I had been to the hospital and some changes were done via programming, but somehow the new program is not working well as compared to it can happen. The old program may much be better. And in our setup, we always give a backup program to all the patients when they come for reprogramming. The old program is given as a backup because even if we fine tune it, sometimes if the program is not good, the patient can revert back to the old program. Yes, Kamalji, you can do upper body exercises. Patient says, my father has a Parkinson disease, but no vibration in the body for 6 years. We were advised Sindopa Plus. Is it okay? One has to meet a movement disorder specialist or a neurologist expert in the field to make a correct diagnosis and then only decide. Will DBS help in PSP patient? Yes, in certain group of PSP patients, it can help, but only very select group of patients, especially if they have major problem with freezing of gait. चलते समय पैर चिपक जाते हैं तो what happens if the patient stops taking tablets given for any reasons? His symptoms will revert back. It is like petrol in the car. गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे तो क्या करो होगा गाड़ी बंद हो जाएगी. Recently we visited a nature cure acupuncture. Their doctor suggested काफी कुछ. I can't tell you about nature cure and other therapies. I only know allopathy. Does massage help in reducing tremor? Again, I can't comment. At what stage DBS is recommended? I have already answered. Nowadays, stem cell therapy are very much show good results. I don't know of any stem cell therapy done by any reputed center in the world for Parkinson's disease at the moment. They are all in experimental stage. So no stem cell therapies. They are all done by experimental in people and experimental settings. No mainstream major centers like Mayo Clinic, Cleveland Clinic, or Just Lock Hospital are involved in any stem cell. Is there any patient who got disability certificate or itis dystonia? I have no idea. Is there any naturopathy? I can't tell you about naturopathy. Does DBS in Parkinson's control or improve mobility? Yes, it helps significantly to improve the mobility. One of the patient is having, it's my patient only, having dyskinesia. She would have to adjust the stimulator, and you can contact our team at Just Look and they will help you adjust the pacemaker or medications. DBS is safe for a long time. Yes, we have had patients who have been using DBS for more than 20 years. PSP advanced stage cannot be offered surgery. Parkinson disease is based on any kind of test. Yes, there are tests, but mostly it is still a clinical diagnosis. Someone wants to know whether they can increase the dose of the medication. Once again, you have to consult your neurologist or a movement disorder specialist for that. Can physiotherapy and exercise slow? Yes, physiotherapy and exercise both can slow the progress of Parkinson's disease.
Wearable devices, yes, we will be covering all those things like gadgets and everything in the next webinar. Someone had a deep brain stimulation done in some other hospital, and she was suffering from cervical and oromandibular dystonia, cervical dystonia. Nothing is working. Botox. She has undergone RFA due to suspect of trigeminal neuralgia. I think your this patient Dev Sharma requires much more detailed assessment and understanding about what the problems are. For cervical dystonia, we are having a new method of algorithm-based programming, which is very unique, and I would be presenting the outcome of these results in the next couple of weeks in the Neuromodulation Society's national meeting in Kolkata. Someone has undergone deep brain stimulation in December. However, I have started having balance issue leading to falls. You require to get reprogrammed. Programming might be able to solve your issues. Suitable candidate for DBS, I have already discussed all the options. Can you provide us with simple literature to reach our population suffering? I would be able to help depending on what kind of literature. The topic is very vast. तो कौन सा लिटरेचर चाहिए आप बताइए हमारी टीम को, तो वी विल बी एबल टू क्रिएट दैट लिटरेचर एंड शेयर. आई एम ऑलवेज हैप्पी टू एजुकेट एंड क्रिएट अवेयरनेस. What about magnetic resonance guided ultrasound? I have already covered in the topic. Is deep brain stimulation surgery is not risky in experienced hand. As I told few minutes back, our risk of complications came down significantly after the first 200 surgeries. In last more than 300 surgeries, we had not had any complications of severe problems. What symptoms qualify for GPI and STN stimulation both? Very interesting question. I don't know. It is Salim Sheikh. He is a person who has been reading a lot of literature. Yes, Salim, this is a complex question that it's difficult for me to answer for lay people. And you are a different person. You have been researching a lot. But there are very few cases which I would suggest. Most of the things we should be able to control with either GPI or STN. It all depends on the center's experience, and sometimes Americans wants to do an overkill or show something new. So everything that we find in literature may not be the best practice. If the patient is having hallucination, is it advisable to go ahead with DBS? Yes. The second patient in 1998 that I performed was specially for hallucinations. Patient had severe hallucinations, and we had to offer DBS so that after DBS we could reduce the medications to control the hallucinations. What is DBS? Deep brain stimulation. DBS is deep brain stimulation. Is there a AI-based DBS equipment? Yes, we are working on some algorithmic-based programming technique for last 3 years. It is one of the first or the most complex algorithm guided automatic programming that we may be able to develop. I'm not sure because it's a research which is undergoing at Justlo, which may be, but that is the advantage that we keep on evolving or innovating, and that is where it can. What is the cost of HIFU treatment? It's not possible for me to talk about the treatment cost directly here. You can talk to my team, and they will guide you as to get the actual cost of various things. Right now, she's unable to walk, patient, and is unable to swallow. Could be Parkinson plus syndrome, and you should try to find out. I'll go for 5 more minutes, and then we will answer all the other questions later on. Sir, is there any life issues after undergoing? My father is having Parkinson's since 5 years, and now Dr. Harshvardhan of JRH Railway Hospital suggested him to go for it. Life issue, I told you about the risk of surgery, and that is the life risk. Means there are multiple risks, and the risk can only be minimized with an experienced team and an experienced surgery. No, are memory hallucinations and delusions symptoms of Parkinson? Yes, they can be associated with patients of Parkinson's disease. They are not typically the symptom of Parkinson's disease. So, if you are having hallucination, that doesn't mean that you are having Parkinson's disease.
Someone is talking about the surgical cost. They can contact my office and we can see whatever best we can do. Khushru Karai. PSP, I have already addressed these questions. I also know that when we skip one pill, cinematic ability to talk and go is a lot better than. Yes, so that means, Etesham, you would have to get assessed by your doctors to properly tailor or adjust your medication. Depigmented area around the operative site, I think you should go to and check with your doctor. I can't comment without this. MRG FUS we may be launching soon, but it would be only for research purpose. As I said, I'm not very convinced that it would be very effective for Parkinson's disease in the present condition, unless we develop some more knowledge. So we should be bringing in definitely, but it would be much more for research and for conditions like pain, psychiatric disorders, epilepsy, and other things. So for Parkinson's disease, I still think deep brain stimulation will remain the gold standard for next 5 to 7 years. After that, I don't know when the new research is come. Pallidotomy means making a lesion in the brain in globus pallidus internus. Someone has a battery problem, so they have to contact their doctors. They will be able to help you solve. And 2 more minutes, what are some side effects after the surgery that a patient suffers with? There are several of them. Most of them can be controlled with advanced programming knowledge. What about YOPD? I have already discussed about YOPD. YOPD gets excellent outcome and benefit after surgery, and YOPD should not delay their surgery. They should immediately think about surgery if they can manage to convince themselves. Someone had some reactions to medications, dyskinesia because of Phenergan. I don't think I can opine on that on the chat. Once an overall physical exercise along with mental exercise does it help? Tremendously. We have showed it by research, advanced research. So I would encourage every person to continue physical exercises plus meditation at least 3 times in a week. Apart from dance and music, there are many therapies. Yoga is better, physiotherapy is better, socializing is better. But we have not personally done research. There is research available on the internet. Deep brain stimulation involves electrode implantation in the brain and connecting to a pacemaker. Pradeep Singh, all kinds of exercises are beneficial for patients who are likely to develop Parkinson's disease or who have Parkinson's disease. Mainly gait and balance exercises are more useful because and posture. So anything that you can focus on posture, gait, and balance would be always useful for the future. Okay, I think I will end here and thank you everybody. We have more than hundreds of questions. I have tried to answer as many as possible. And we can always get engaged again, and I will try to answer more on the Just Look DBS channel. Thank you very much once again for everybody to join this webinar, and hope to see you soon, maybe end of this year or early next year. Goodbye.